You're watching South Asia News London. Here are the top stories we are tracking for you on Wednesday, the 11th of February. Government, opposition spar in Parliament over India-US deal. US treated Pakistan worse than toilet paper, claims Defence Minister on Afghan war. And inflation concerns take centre stage ahead of Bangladesh votes. And now for all the details. The India-US trade deal has triggered political debate in the Indian Parliament, with the leader of opposition and lawmakers from the ruling alliance engaging in a war of words. Meanwhile, within hours of releasing a fact sheet on the new interim trade agreement, the White House has revised key claims. We have a report. India's Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju and Leader of Opposition Rahul Gandhi sparred over the India-US trade deal on Wednesday amid a political showdown in the Parliament over the details of the agreement. Leader of Opposition, Rahul Gandhi, alleged that Prime Minister Narendra Modi's government had surrendered to US pressure. He blamed that Indian farmers and key sectors such as textiles and energy security could be adversely affected. What I want to conclude with, sir, is we are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said. I think so. Can I conclude? Sir, conclude. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold. Rijiju strongly rebutted the accusations, calling them baseless and urging Rahul Gandhi to authenticate his claims. The chair ruled that Gandhi's allegations would not go on record. Rijiju later declared, "India is not for sale," accusing the Congress party of weakening the country and defending Prime Minister Narendra Modi's leadership. राहुल जी ने कहा कि हमारा देश भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है? Meanwhile, the White House has quietly updated its fact sheet on the recently announced India-US interim trade deal, reports suggest. The revised document removes certain pulses from the list of U.S. agricultural products. Instead of saying India had committed to buying $500 billion worth of U.S. products, the updated fact sheet now says India intends to buy more American goods, language that mirrors the February 7th joint statement issued by both countries. And Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif has delivered a blunt critique of Islamabad's past alignment with Washington, saying the United States used Pakistan for its strategic objectives and then discarded it worse than toilet paper. Asif said the decision to side with the US, particularly during the anti-Soviet war in Afghanistan and again after the 9/11 attacks, inflicted lasting damage on Pakistan. The remarks came as Pakistan's National Assembly passed a resolution this week condemning the attack on a mosque in Islamabad, which Pakistan has blamed on an Afghan IS mastermind. He challenged the long-standing narrative that Pakistan's involvement in Afghanistan was rooted in religious duty, acknowledging that citizens were mobilized under the banner of jihad for conflicts driven largely by American geopolitical interests. Asif said even the country's education system was reshaped to legitimize those wars with ideological consequences that persist today. Referring to the post-2001 period, he said Pakistan turned against the Taliban to back the US-led war on terror, only to be left grappling with violence, radicalization, and economic strain after Washington's withdrawal.
Asif described the decisions taken under former military rulers as grave miscalculations, calling the losses suffered by Pakistan irreversible. Moving on. The people of POGB continue to face decades of political neglect under an imposed and deeply flawed system of governance. The region remains marginalized as real authority rests with Pakistani establishment, trapping locals in underdevelopment and broken promises. We have a report. Decades of neglect have left the people of Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan frustrated and disillusioned. Shafkat Inqalabi, a local politician, lamented that an imposed system prioritizes control over development, denying locals real representation and basic rights. With grievances unheard, resentment, especially among the youth, continues to grow. पाकिस्तान ने एक ऐसा निज़ाम मुरतब किया है कि इस निज़ाम का टोटली बेनिफिशियरी बने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उनकी मजबूती भी यहाँ पर बरकरार रहे। इसलिए यहाँ पर ये जो मौजूदा निज़ाम है, ये निज़ाम फरसुदा निज़ाम है। इस निज़ाम से यहाँ के स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान से नाला नजर आते हैं और सोशल मीडिया की वजह से यूथ इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया आने के बाद दुनिया के अंदर जो निज़ाम मौजूद है उस निज़ाम तक लोगों की रसाई मौजूद है। इस रसाई के सबब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये पता है कि ये आज भी दुनिया की आखिरी कॉलोनी में रह रहे हैं जहाँ पर कॉलोनियल निज़ाम मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान में असल हुकूमत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। यहाँ पर एक 100 कार्ड सा प्रोविंशियल तर्ज का सेटअप दिया गया है, बज़ाहिर एक वजीर आला बनाया गया, बज़ाहिर एक गवर्नर भी दिया गया, बज़ाहिर 5-6 वज़रा भी होते हैं, एक कैबिनेट भी होती है, हुकूमत भी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या कहते हैं ताकत का जो सरचश्मा है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, खा वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो। The demand from Gilgit-Baltistan is clear: meaningful self-governance and control over local affairs. Without constitutional clarity and real devolution of powers, the region remains dependent and uncertain. गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को गिलगित बल्तिस्तान का उबूरी आइन बनाने की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ डिफेंस, करेंसी और फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान अपने पास रखे, बाकी तमाम तरह इख्तियारात गिलगित बल्तिस्तान की जो मुकामी असम्बली है इसको मुंतकिल करें और इंटीरियर बुनियादों में पाकिस्तान के साथ एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनएफसी में गिलगित बल्तिस्तान का शेयर डिक्लेयर हो, क्योंकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जो चल रहा है, जिस तरह एनजीओस ग्रांट देती है गरीब ममालिक को, अफजदा ममालिक को, इसी तरह ग्रांट इन एड पे चल रहा है। पाकिस्तान ने खुद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस इलाके को कमजोर रखा होगा और ये कमजोरी अपनी मजबूती के लिए रखा था। अब अगर यही निज़ाम बरकरार रहा तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। Years of neglect in POGB are evident in daily life: poor roads, limited healthcare, weak education, and scarce jobs. Development remains largely on paper, forcing many young people to migrate in search of a future. And as Bangladesh prepares for national elections tomorrow, rising prices and economic hardship are dominating voter concerns. For many working-class families, soaring inflation is shaping not only their vote but their daily survival. We have a report. Every day during their 1-hour lunch break, 22-year-old Mohammed Suman and his 19-year-old wife, Mozamat Rosina, rush home from their leather factory jobs near Dhaka. They cook, eat quickly, and return to work. The couple has spent the past 7 years working in the same factory. They married 4 years ago and now rent a single 10 by 10 foot room. Together, they earn about 30,000 takas, roughly $246 a month. আমাদের এই যে চাকরির বয়সে যে চাকরি করতেছি, আগে যে দিনকাল গেছে আর এখনকার দিনকালের সাথে আগে অনেক ডিফারেন্স হয়ে যায়। আগে 1000 টাকা বা বাজারে নিয়ে গেলে মাছ মাংস অনেক কিছুই করা যেত, আর এখনকার 10,000 টাকা নিয়ে গেলেও কিছু হয় না। মানে এরকম কষ্ট হয়ে যায়, এদিকে ফ্যামিলি, খাওয়ান, ঘর ভাড়া দিয়ে লাস্টে হিসাব করে দেখি যে কিছুই থাকে না। অযথ দিন শেষে আবার মাস শেষে কী করা লাগে, মানুষের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে চলা লাগে। এরকম হলো দিন, সব কিছু এমন একটা কষ্ট দিন যায় মাঝে মধ্যে, মানে বলার মতো না। On top of paying rent and groceries, they also help support their parents and sometimes grandparents. Rising costs have forced them to postpone starting a family. Even 2 incomes are no longer enough. A recent opinion survey shows corruption and rising prices are the top concerns for voters.
For Suman, party loyalty is less important than economic relief. ওয়ার্কে অনেক প্রেশার পড়বো একা চাকরি 20,000 টাকা স্যালারি রুম ভাড়া খাওয়া দাওয়া এমনি বাজার টাজার আর এমনিতেই কাঁচা বাজারের যে দাম 500 টাকা নিয়ে দিন বাজারে গেলে কিছুই হয় না মানে অনেকটা প্রেশার পড়ে যাবো গা বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার পরে Bangladesh's economy has been under strain from high inflation, declining foreign reserves, and slowing investment. Inflation climbed to 8.58% in January, according to official data. Since 2022, the country has sought billions of dollars in external financing from the International Monetary Fund and the World Bank. Bangladesh is slated to hold the polls on February 12, with nearly 128 million eligible voters. Moving on, Nepal is conducting its nationwide HPV vaccination campaign to protect thousands of young girls from cervical cancer. The ministry has directed health bodies across the country to wrap up the inoculation drive within 3 weeks to avoid any disruption during the elections next month. The campaign targets girls studying in grade 6 as well as out-of-school girls aged 10 and above. Health workers are administering vaccines in schools, while out-of-school girls can receive their shots at designated health facilities. Those girls who missed last year's vaccination drive are also being covered. In Nepal, cervical cancer remains a major public health concern. Doctors estimate that at least 4 women die every day from the disease. More than 700 cervical cancer patients seek treatment annually at BP Koirala Memorial Cancer Hospital alone. Medical experts stress that vaccination before girls become sexually active significantly reduces the risk. HPV spreads through skin-to-skin contact and is a leading cause of cervical cancer, the second most common cancer among women in developing countries. भ्याक्सिन अभियान चाहिँ चालु भएको छ यस भ्याक्सिनको नाम चाहिँ एचपीभी खोप हो अनि यो चाहिँ अब सिकोलिक भनेर चाहिँ आएको छ भ्याक्सिनको नाममा चाहिँ अनि यसमा चाहिँ अब यो भ्याक्सिन लाउनु पर्ने उमेर समूह भन्दाखेरि चाहिँ 10 देखि 19 किशोरीहरू भनेर चाहिँ उमेर समूह चाहिँ त्यसरी तोकेको छ भनेपछि अनि अर्को चाहिँ विद्यालयको हकमा चाहिँ कक्षा 6 को छात्राहरू लाई चाहिँ यो भ्याक्सिन सञ्चालन गर्ने एचपीभी भ्याक्सिन चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ Moving on. Cricket fans across India and Pakistan are eagerly awaiting their T20 World Cup clash in Sri Lanka after the Pakistan government reversed its earlier boycott over geopolitical tensions. The decision was announced on Monday following appeals from cricket authorities, including the Bangladesh Cricket Board, during discussions with the International Cricket Council and the Pakistan Cricket Board in Lahore. Pakistan had pulled out after the ICC replaced Bangladesh with Scotland when Dhaka declined to travel to India, a co-host of the tournament. The ICC clarified that Bangladesh would face no penalties and confirmed it will host an ICC event ahead of the 2031 World Cup, which India and Bangladesh will co-host. बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, हमें अपनी टीम पे फख्र है, इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी और इंडिया को हराएगी। ठीक है, मैदान में आना चाहिए हमारी टीम को, हम अपनी फुल फख्र के साथ बोलते हैं इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी और कामयाब भी होगी। The upcoming blockbuster clash in Sri Lanka on 15th of February remains a source of unity, hope and pride for millions as excitement continues to build. India, the world's top-ranked T20 team, are aiming to become the first side to successfully defend the title and first host to win the tournament. हो और पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो और वर्ल्ड कप हो तो ऐसा मज़ा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस में जान आती है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से आती है। दुनिया को पता है कि हमारा मुकाबला इंडिया से और इंडिया को पता है कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से है। खेल को खेल की हद तक रखेंगे तो वो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा है, जिसमें सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि आवाम खुश होती है या नौजवान नस्ल जो क्रिकेट खेलने वाली है वो खुश होती है, इसमें बिजनेस बढ़ता है, कारोबार बढ़ता है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है। लेकिन अगर आप इसको जंग की सूरत इख्तियार करेगा मैच तो फिर गलत है, फिर दोनों मुल्कों के लिए गलत। And that's all in tonight's edition. We will see you same time tomorrow. Till then, good night.